process schedulers. So process scheduling, it is nothing but the system software which is used to change the different states of the process or to swap the process from one state to another state. But again, this process scheduler that are divided into three different types. So what are that three types of schedulers? So three types of schedulers are long-term scheduler, which is called as job scheduler, short-term scheduler, which is called as CPU scheduler, and medium-term scheduler, which is also called as swapping and dispatcher. Now, what is this job scheduler, CPU scheduler? That we will see now. So we have already learned the process life cycle or process state transition diagram. In that diagram only now we will learn that what is the job of these different types of schedulers. See, when the process is present on the secondary disk or on the hard disk, then we can say that process, it is entered into the new state, that it is present into the job queue. That is new state of the process, it is present in this in the hard disk or on the secondary memory. Okay, now here once the process is completed, that will get added into the ready queue, and this job it is done by the operating system. But operating system के कौन से सॉफ्टवेयर ये जॉब करता है? So the long term scheduler. So what is long term scheduler? So see here in this diagram you can see that the long term scheduler of an operating system, it selects the process from the new, it selects the process which is present on the hard disk depending on the particular strategy, and after that it will add that process into the ready queue. So long term scheduler का task क्या है कि उसको process secondary memory से और hard disk से उठाना है, and after that it will swap out or it will keep that job or it will keep that process onto the primary memory in the ready queue. So this is the job of the long term scheduler. अभी let us consider that अभी ये queue है and suppose it can hold only 100 processes at a time. So what will happen? Suppose the ready queue is full. अगर रेडी क्यू फुल है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने सेकेंडरी ड्राइव से एक प्रोसेस लिया है, बट नाउ ऑलरेडी 100 प्रोसेसेस आर देयर. सो इफ दिस क्यू इज फुल, देन दैट इट व्हाट इट विल डू, it will keep that process, this long term scheduler, it will keep that process into the suspend ready state. So suspend ready state इसका मतलब क्या है? Process is ready to execute, but here उसको प्लेस नहीं मिला है रेडी क्यू में, इसीलिए वो सस्पेंड रेडी स्टेट में ऐड हुआ है. एंड व्हेन सपोज 100 प्रोसेसेस, इट कैन होल्ड 100 प्रोसेसेस एट अ टाइम. सपोज वन ऑफ द प्रोसेस इट इज शिफ्टेड टू द सीपीयू, that is swapped to the CPU, then यहाँ पे एक जगह खाली हो गया, then what will happen there? That process it will get shifted from suspend ready to the ready state. Okay, so what is the job of the long term scheduler? To perform the swapping from secondary memory into the primary memory, that is from new state into the ready state. Okay, नाउ सी व्हाट इज द शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग. तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग का शेड्यूलर का टास्क क्या है? अभी रेडी स्टेट भी आपका प्राइमरी मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है और रनिंग स्टेट भी आपका प्राइमरी मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज प्रोसेस इट इज एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू ओनली. सो योर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर व्हाट इट विल डू, it will select the job or process from the ready queue depending on the particular strategy, and then it will assign that process, it will assign the CPU to that process. So this is the work of the short term scheduler. So short term scheduler it works in the primary memory only. वो ready state से job को select करेगा and it will place into the running state. Okay, and after that if that process is completed, it is placed into the exit state or into the termination state. अगर वो process को कुछ input output resources नहीं लगा, directly we have executed it and उसका job complete हो गया, तो वो exit state में जाएगा. But now let us consider that if you want to read some file from the hard disk or from the secondary memory, so here we require the input output resources क्योंकि आपको read करना है. So what it will do, that process is preempted or it is swapped from running state into the block or suspend state. तो ये आपका इनपुट आउटपुट क्यू है, वहां पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर विच आर वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रोसेस रन हो रही है तो वो प्राइमरी मेमोरी में है, लेकिन जब उसको डेटा रीड करना है तो डेटा तो आपका हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी में है. तो आप प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कैसे डेटा रीड करोगे? बिकॉज whenever you are performing the reading operation, आपका सीपीयू जो प्रोसेसर है वो तो आइडल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है. तो अगर ये प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर रही है तो व्हाट विल डू हियर, ऑपरेटिंग सिस्टम इट विल स्वैप दैट प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू टू द इनपुट आउटपुट क्यू, एंड दैट टाइम it will take another process
your short term scheduler, it will select another process from the ready queue and then it will add it into the cpu, क्योंकि अभी जो प्रोसेस इसमें था वो तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए चला गया, मतलब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी से वो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया. आफ्टर दैट सपोज ये जो क्यू है आपका इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट क्यू, इट इज ऑल्सो फुल. वहां पे ऑलरेडी 100 प्रोसेस है जिसको प्रिंटिंग जॉब करना है और आपकी 101 नंबर की प्रोसेस है. तो नाउ दैट प्रोसेस इट विल एडेड इनटू सस्पेंड वेट, मतलब वो इनपुट आउटपुट के लिए ही ये स्टेट में आया है, लेकिन ये क्यों फुल है, इसलिए दैट प्रोसेस इज एडेड इनटू द सस्पेंड वेट स्टेट. ओके, अभी सपोज यहाँ पे 100 प्रोसेसेस है, तो एक का इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग जॉब चल रहा है, वो प्रिंटिंग जॉब कंप्लीट हो गया है, तो दैट प्रोसेस इट इज एडेड इनटू द रेडी क्यू अगेन, क्योंकि उसका ऑपरेशन डायरेक्टली हो गया. सो दिस इज द टास्क ऑफ द मीडियम टर्म शेड्यूलर. तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, जो ब्लॉक स्टेट है, जो वेट स्टेट है, वहां से प्रोसेस उसका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वो प्रोसेस वहां से लेके फिर से रेडी क्यू में डाल रहा है. ओके, नाउ यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक जगह खाली हो गई क्योंकि दैट प्रोसेस इज शिफ्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इनटू द रेडी स्टेट. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ब्लॉक और वेट स्टेट में, सो दैट प्रोसेस इट इज एडेड इनटू द इनपुट आउटपुट क्यू और डिवाइस क्यू बाय यूजिंग दिस मीडियम टर्म शेड्यूलर. अगेन यहाँ पे सपोज अगर रेडी क्यू में आपकी एक जगह खाली हो गई, तो व्हाट योर मीडियम टर्म शेड्यूलर विल डू, इट विल सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंड रेडी स्टेट, क्योंकि पहले उसको रेडी क्यू में कुछ जगह नहीं मिली थी, इसलिए दैट इज एडेड इनटू द सस्पेंड रेडी क्यू. बट नाउ अगर रेडी क्यू में इफ दैट स्पेस इज फ्री, देन योर मीडियम टर्म शेड्यूलर इट विल सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंड रेडी स्टेट एंड दैट विल गेट एडेड इनटू द रेडी क्यू. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर. सी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या कर रहा है, वो न्यू से मतलब सेकेंडरी मेमोरी से वो या तो रेडी क्यू में डाल रहा है प्रोसेस को या तो सस्पेंड रेडी में डाल रहा है, अगर रेडी क्यू फुल है तो. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जॉब है वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में वर्क करता है. प्राइमरी मेमोरी में मतलब अगर रेडी क्यू में प्रोसेसेस है तो स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वो ऐड कर रहा है रनिंग स्टेट में. और मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या फंक्शन है कि अगर प्रोसेस सस्पेंड रेडी है, मतलब वो रेडी क्यू का वेट कर रही है, अगर वो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज का वेट कर रही है, and when it will complete the input output resources, it will get added into the ready queue. So these are the different types of schedulers.